नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर द बैंक रिटायरीज फॉर द ईयर नवंबर 24 टू अक्टूबर 25। और इस संबंध में AIBPRC ने IBA चेयरमैन को एक पत्र 22 जुलाई को लिखा। विद रेफरेंस टू द लेटर डेटेड July 8, 24, in the aforesaid letter of ours, we have conveyed our thanks to all concerned for arriving at an agreed position to float a combined health insurance policy for the in-service employees and the retirees, as was the case in year 2015 when the scheme was first launched at the instance of DFS and Government of India. We have also made several other requests to you, which include inter alia, Government of India may be requested to waive, reduce substantially the GST component on the premium of the health insurance policy for the senior citizen of the country. B. The coverage should be extended to the physically and the mentally challenged children of the retirees, since the number of such unfortunate couples are very few in number. C. Reasonability and the customary clause should either be abolished to rationalized. D. Beneficial clauses of the recently issued Master Circular of IRDAI be advised to the eligible insurance company at the proper time. As the retirees have badly suffered during the period of 2016 to 2024 for the repeated escalation of the quantum of premium, they have different apprehensions in mind and be put on record the following issues which may please be taken care of while finalizing the group insurance scheme. The premium of the retiree should be the same as that of the serving employee. The facility of the top-up policy should be settled through the negotiation, and it should not be left solely to the discretion of the insurance company. At the time of floating the bid, the issue should be clearly mentioned that the premium on the top-up policy for a particular slab should be the same as in the case as in the service employee and the retirees. The retirees otherwise will run the risk that the insurance company might fix up a premium for top-up policy at an exorbitantly high level as it happened in the current year. Third, the premium of the base policy for the retiree should be fully subsidized by the respective banks as per the demand of your view. The scheme should cover the physically and the mentally challenged children of the bank pensioner and retirees on the humanitarian grounds. The Ayushman program of the government much higher amount of coverage to the targeted sector, and in all fairness bank pensioner and the retirees group medical insurance scheme of IBA should reflect a much better scheme for them vis-a-vis the scheme brought out by the government. We have been requesting the IBA to consider SBI scheme and not to cause the discrimination among the bank pensioner and retirees, especially in the matter of health and the medical support. We suggest the IBA may seriously consider extending to the bank pensioner and the retirees also the health scheme available to the government pensioner who are covered with the lifetime medical support by making वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और जो सजेशंस AIBPRC ने लिख के भेजे हैं IBA को, उसमें जो महत्वपूर्ण है, सबसे तो इम्पॉर्टेंट है, द प्रीमियम ऑफ द रिटायरीज शुड बी द सेम एज दैट ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय. द प्रीमियम ऑफ द बेस पॉलिसी फॉर द रिटायरीज शुड बी फुल्ली सब्सिडाइज बाय द रिस्पेक्टिव बैंक्स एज पर द डिमांड ऑफ योर ग्रुप. जब तक बैंक टोटली सब्सिडाइज नहीं करता है रिटायरीज के प्रीमियम को, तब तक
इसमें सुधार आने की गुंजाइश कम लगती है, क्योंकि कंपनी सारा जो बोझ प्रीमियम का होता है वो रिटायरीज पे डालती है। और इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट जो उन्होंने अच्छी लिखी है, जो होना चाहिए, वी सजेस्ट दैट IBA may seriously consider extending to bank pensioner and retirees also the health scheme available to the government pensioner who are covered with lifetime medical support by making one time payment at the time of retirement। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि जो CGS हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम चलती है, उसमें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक लमसम अमाउंट जो उन्होंने अपने हिसाब से फिक्स किया है वो जमा करा देते हैं, और उनके वाइफ हस्बैंड होल लाइफ के लिए उसमें उनका कवरेज हो जाता है, जिससे उनके मेडिकल की प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज की सॉल्व हो जाती है। इसी तर्ज पे स्टेट गवर्नमेंट भी की स्कीम भी चलती है। बैंक में भी अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक लमसम अमाउंट जो भी बैंक एनालिसिस करके, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस करके जो भी हो उसको रखे और उससे पैसा रिकवर करके एक फंड कॉर्पस तैयार करे, और ताकि सारे रिटायरीज को होल टाइम जो लाइफ टाइम जो उन्हें हेल्थ कवरेज मिल सके। लेकिन IBA और यूनियन जब तक EOB भी इसको उसमें साथ देना होगा, क्योंकि रिटायरीज उनके दुश्मन नहीं हैं, उनके भी साथी हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।